Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mosam, and you are watching news and updates. और आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि वीडियो जो है वो किसके बारे में है? APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम। यस, और माशाल्लाह ही इज़ वेरी रिनाउंड पर्सन और उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो को देखने के बाद हमें पता चलेगा, बिकॉज आप लोग तो जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग क्योंकि इतना आइडिया नहीं, हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। तो अभी ऐसा करते हैं कि हम उनकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनकी अचीवमेंट्स पर और उनकी लाइफ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। Dream is not that you see in sleep. Dream is something that does not let you sleep. Very true. In this episode, we're taking a look at one of the greatest heroes to all, if not most, Indians, more popularly known simply as APJ Abdul Kalam, a man who came from humble beginnings and rose up as the leader of a nation. What's happening, everybody? My name is Leroy Kenton. Welcome back to another episode of FTD Facts, and throughout this video, I'll be referring to APJ Abdul Kalam most times as Dr. APJ, and he's literally our most requested topic right now. Like, we have pages of requests from people asking us to do a video on Dr. APJ. People like Jahid Gul, Shivam Kumar, Josh Gamer MC, Tech Hub MEA, Jeshwant Reddy, Mani Dwivedi, Kanishk Rawat, Young Homie, Anurag Dubey, and Pal Piali. And that is just a few of you guys. Now, before we officially begin with this video, I want to ask you guys, what or who inspires you? Beginning with the early life of Dr. APJ, APJ Abdul Kalam was born on the 15th of October in 1931 in British India. He was born in a region that is now called Tamil Nadu. In his early years, Dr. APJ spent a lot of his time studying mathematics, which led to a fulfilling career as a scientist. He came up from a poor background and he actually had to start working at a very early age just to supplement their family's income. For work, he distributed newspapers after school, and his father, Janulabdin, had no schooling at all. However, he did own a ferry and he took Hindu pilgrims back and forth between Dhanuskodi and his hometown of Rameswaram, Tamil Nadu. Dr. APJ attended the Madras Institute of Technology and graduated in the year 1960. After that, he joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization, or in short, the DRDO. And then following that, in the year 1969, he was transferred to work for the ISRO, and that is the Indian Space Research Organization. Now, from there, that is when his whole career skyrocketed. He was a project director of India's first satellite launch vehicle, the SLV-3, which had successfully deployed the Rohini satellite in near-Earth orbit on July 1980. He was heavily involved in India's military missile developments, and for that, Dr. APJ was nicknamed the Missile Man. And yeah, he really earned this name because of his work in the development of ballistic missiles and launch vehicle technology. I mean, this guy was like a gifted, talented genius. So why is this development so important in terms of ballistic missiles? Well, it gave India another tool that allowed them to have a great tactical advantage rather than using the standard cruise missiles. The main advantage is that ballistic missiles can fly above the atmosphere and travel very quickly. Just to give you an idea, a target at 10,000 kilometers away would be hit in 30 minutes. Because of the efforts of Dr. APJ, India's Pokhran 2 nuclear tests in 1998 were advanced much more quickly as well. Because you see, the previous nuclear test that was done by India was back in the year 1974, so that's more than 20 years prior. As I mentioned before, he is just a natural gifted genius, so it's no surprise that he was a recipient of honorary doctorates from 40 universities. That's 40. Okay, and check this. His impact as a scientist was so great that in the country
country of Switzerland, May 26 is considered Science Day to commemorate Dr. APJ's visit to Switzerland. Wow, he even has a national day in another country based off of him. Now, there's so many other facets to his career as a scientist, but I want to quickly touch on his career in politics. Dr. APJ served as the 11th president of India. He won the 2002 presidential election, and he was in office from the 25th of July 2002 to the 25th of July 2007. And because of his humble attitude and demeanor, he also earned another nickname, the People's President. But surprisingly to me, and I'm sure to many others as well, although he achieved so much, Dr. APJ was never married. At the presidential residence, the Rashtrapati Bhavan, his hairstylist Ahmed asked him why he never got married, and his response was this: "I was married. I was married to the missile." And that was just solid confirmation that Dr. APJ was committed to serving his nation. Everyone on this planet has a different calling, and for Dr. APJ, it was advancing his country. Now, APJ Abdul Kalam didn't just love his work. He was a great lover of poetry, most specifically Tamil poetry. He could play the veena, as well as he could recite the Quran and the Bhagavad Gita, as well as he knew the Holy Scriptures very well. The religion he did identify with, though, was Islam. Now, we can't fit all the information about his life in just one video, but I do recommend his autobiography that was written. It's called Wings of Fire. It was first published in English, but has since then been translated into more than 13 languages. He was a prolific writer and wrote about 15 books. The subject matters on those books range from nuclear physics to his spiritual experiences. You can clearly see why this man was and still is an inspiration to many people. And I haven't even touched on the amount of awards that he received. In the year 1997, he received the Bharat Ratna, which is the highest civilian award in the country of India, as well as here are some of the other awards that he's won. But sadly, all great things do come to an end in this life. While delivering a lecture at the Indian Institute of Management, Dr. APJ collapsed and died from apparent cardiac arrest on the 27th of July 2015. He was 83 years old at the time. But his legacy will continue to live on in the hearts and minds of many people, as well as through his writings and videos made after him. The life of Dr. APJ even inspired one Hindi film. The movie was called I Am Kalam. In it, Dr. APJ Abdul Kalam is portrayed as an extremely positive influence to a poor boy named Chotu, who later on renames himself Kalam in honor of the man who inspired him. Thank you. वीडियो को देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपको वर्ड्स इस तरह के चूज करने चाहिए जो कि उनके लिए रिस्पेक्ट हो हर एक वर्ड में, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स और उनकी जितनी भी लाइफ है वो हमारी अप्रिसिएशन की मोहताज नहीं होती कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब वो 11th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उस टाइम पर, तो दोनों जो पार्टीज थी बीजेपी और साथ में कांग्रेस, दोनों की तरफ से, मतलब आप देखें जो रूलिंग पार्टी और जो ओपोजिशन पार्टी, दोनों की तरफ से उनको इलेक्ट किया गया था, दोनों की तरफ से सपोर्ट किया गया था, और ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत हम्बल पर्सन थे वो, बहुत सिंपल थे, और उनकी सिंप्लिसिटी जो उनकी थी उन्हीं की वजह से उनको पहचाना जाता था। इवन कि आई हर्ड कि ही नेवर ऑन्ड अ टेलीविजन। कैन यू इमेजिन दैट? इतने सिंपल इंसान थे कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में वक्फ कर दी। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने इंडिया के मिसाइल रिसर्च प्रोग्राम में भी काफी हेल्प की है। उसके बाद इसरो जो इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने काफी जो है हेल्प की। इसरो को उन्होंने ज्वाइन किया था और फर्स्ट सैटेलाइट जो उनका था प्रोजेक्ट, उस पर उन्होंने हेल्प की थी। इसके अलावा मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट में भी उन्होंने हेल्प की थी, बिकॉज उनकी जो स्टडीज थी, ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस
1974 में इंडिया ने जब अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तब डॉक्टर अब्दुल कलाम की ज़ेरे निगरानी किए थे, और उसके बाद जब दोबारा इंडिया ने काफी अरसे बाद किए थे वो भी ही इनके सर्वेलेंस में किया गया था। तो माशाल्लाह से, और मुझे इस चीज़ से भी बड़ी हैरत हुई है वो वीडियो देखकर कि उन्होंने कभी शादी नहीं की और उन्होंने अपना पूरा टाइम अपनी जिंदगी का लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए दे दिया हुआ है। हाँ, और जो वीडियो स्टार्ट जब हुई थी तो शुरू में एक उनका कोट आई थी, उसमें उसका मतलब जो था कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते जो आपको सोने नहीं देते। That's true। और मैं कहती हूँ उन्होंने ये प्रूव करके भी दिखाया, बिकॉज मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करते थे और रात को 2 बजे सोया करते थे। आप देखो मतलब 6:30 मतलब 6:30 और 7 PM वो जाग जाया करते थे और रात के 2 बजे तक सोना, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में। बीच में हम जैसे लोग तो कहते हैं कि हम लोग जल्दी से हमें टाइम मिले और हम लोग ज़्यादा सो जाएं और हम जल्दी ना उठें। हाँ, हम जल्दी ना उठें। खैर, सिंप्लिसिटी की अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी जो पर्सनल चीज़ें थी उनमें सिर्फ उनका एक लैपटॉप, उनकी CD प्लेयर और हिज वीणा, आई थिंक इट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आई गेस, और हाँ, और इसके अलावा एक उनकी बुक्स, तो बस यही चीज़ें थी जो कि मतलब उनकी उन्होंने जो अपनी विरासत में के लिए छोड़ी। और हाँ, नहीं विरासत में नहीं छोड़ी, जो उनकी पर्सनल पोजीशन थी हम वो कह सकते हैं। और उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपनी कोई विल नहीं बनाई थी, सो ऑटोमेटिकली उनकी जितनी भी जो भी उनकी चीजें थी वो उनके बड़े भाई को चली गई, जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया था। तो ये तो थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखकर और जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद हमें ऐसी वीडियो सजेस्ट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।